Hello friends, myself AM sir. In engineering, a ship and an aeroplane is not made by same material. We all know this because the necessities for them are not same. As a design engineer, you should know always which type of material would be optimum for which application. Okay, and from there you should know about the mechanical properties of the material. So now at first we have to know what are the mechanical properties. What is that term mechanical property? ये क्या है? Okay, when you are applying any external force on a particular material, then the response of that material or the behavior of that particular material against that force is called mechanical properties. Okay, हम सभी को पता है कि नेचर में हर एक इंसान का प्रॉपर्टी अलग अलग होता है. सिमिलरली हर एक मटेरियल का भी हर एक इंजीनियरिंग मटेरियल का भी प्रॉपर्टी अलग अलग होता है. तो एज पर रिक्वायरमेंट हमें वो चूज़ करना होता है डिज़ाइन में, क्योंकि बहुत तरह का मशीन कंपोनेंट होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, बहुत तरह का इक्विपमेंट्स होते हैं. हर जगह सेम मटेरियल नहीं चलता, हर जगह लोड डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम नहीं रहता. तो इसी के चलते हमें हर एक मैकेनिक इंजीनियरिंग मटेरियल का प्रॉपर्टी पता होना चाहिए. ओके, तो फर्स्ट आई एम कमिंग on the type of mechanical properties of the material, more specifically engineering material. Okay, so number 1, strength. Number 2, elasticity. Number 3, plasticity. Number 4, stiffness. Number 5, resilience. Number 6, toughness. Number 7, malleability. Number 8, ductility. Number 9, brittleness. And number 10, hardness. Okay, so these are the mechanical properties. Now दोस्तों, मैं इस वीडियो में ये जो 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टी है ये सबको कवर करना पॉसिबल नहीं होगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा खींच जाएगा. तो इसी के चलते मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ. इस वीडियो में आई विल डिस्कस अबाउट ओनली 5 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज in this video, and the rest of 5 mechanical properties I will discuss in the next video. Okay, fine. So first I am coming on the first point, that is strength. So what is strength? We should know. So now, as per definition, strength is defined as the ability of a material to resist external forces causing various types of stresses. किसी एक मटेरियल के ऊपर जो तरह तरह का फोर्स अप्लाई होता है, उसके अगेंस्ट में मटेरियल का कितना एबिलिटी है उस फोर्स को झेल पाने का, रेजिस्ट करने का, विदाउट रप्चर, मतलब टूट ना जाए, ना बिना टूटे वो कितना सह सकता है, उसी को स्ट्रेंथ बोलते हैं उस मटेरियल का. ओके, अब ये 3 तरह का होता है. नंबर 1, टेंसाइल स्ट्रेंथ. Number 2, compressive strength. And number 3, shear strength. Okay, we should know this also, that this strength is classified based on the types of load. As we all know that there are 3 types of load. Number 1 is tensile. The nature of the tensile force is, suppose this is a component, suppose this is a material, and the tensile force would be this type, means away from each other. Okay, the direction of force would be in this direction, away from each other. This is called tensile force, and the strength against this type of force is called tensile strength. Number 2, compressive. Suppose this is a component
material and the type of force is this type. Okay, means towards each other, the force are acting towards each other, इसे compressive force बोलते हैं. एंड इसी का अगेंस्ट में जो स्ट्रेंथ है मटेरियल का उसको बोलते हैं compressive strength. एंड नंबर 3 इज shear strength. shear मतलब कैंची. तो ये जो फोर्स है ये पैरेलल टू ईच अदर होगा. सपोज दिस इज एन इमेजिनरी प्लेन, one force is acting along this direction, another force is acting along this direction. This is an imaginary plane xx. So these forces are equal and parallel to each other. This is called shear force. And based on this, three types of strength is there: tensile strength, compressive strength and shear strength. Okay, fine. So now I am coming to the elasticity definition. It is defined as the ability of a material to regain its original shape and size after the deformation when the external forces are removed. मतलब किसी एक मटेरियल के ऊपर फोर्स दिया जा रहा है तो उसका डिफॉर्मेशन थोड़ा बहुत हो रहा है. अब अगर फोर्स को रिमूव करने से, फोर्स को उठा लेने से अगर वो जो डिफॉर्मेशन हुआ था अगर वो वापस से पहले जैसा बन रहा है तो मतलब वो मटेरियल का इलास्टिक लिमिट के अंदर है. अब ये याद रखना ज़रूरी है कि हर एक मटेरियल का इलास्टिसिटी एक लिमिट तक ही होता है. तो यहाँ पे डेफिनेशन से हमें पता चलता है कि एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू regain its original shape and size after the deformation when external forces are removed. Now look at this paragraph. During the elastic deformation, the atoms of the metal are displaced from their original positions, but not to the extent that they take up new positions. Okay, therefore when the external force is removed, the atoms of the metal return to their original positions and metal takes back its original shape. As we all know, the atomic forces are there within the material. So इस तरह सोच सकते हैं कि जिस मटेरियल का एटॉमिक फोर्स ज़्यादा होगा उसका इलास्टिसिटी उतना ज़्यादा होगा. क्यों? क्योंकि मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ. मान लो यहाँ पे एटॉम है, मान लो यहाँ पे 2 एटॉम्स है. ओके, तो इसका जो बीच का जो इंटरएक्टिव फोर्सेस है एक दूसरे को खींच के रखने का, मान लो वो F है. ओके, अब बाहर से फोर्स अप्लाई करके इसको डिफॉर्म किया जा रहा है, मतलब थोड़ा दूर चला गया. ठीक है, मान लो वो F1 है. अब जब तक F ग्रेटर देन F1 तब तक क्या होगा, तब तक F1 को रिमूव कर देने से ये वापस खींच के पहले की जगह में आ जाएगा. तो मतलब इट कैन रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज. सो दिस नेचर ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड इलास्टिसिटी. Remember always, for majority of materials the stress strain relationship is linear in the elastic range. Okay, very good. Now I am moving to the next mechanical property, and that is plasticity. Okay, it is just you can say as reverse of the elasticity, because the definition is, it is defined as the ability of a material to retain the deformation produced under the load on a permanent basis. मतलब किसी एक मटेरियल के ऊपर तुम कोई फोर्स डाल रहे हो उसको डिफॉर्म करने की वजह से, तो वो डिफॉर्मेशन वो रख सके. मतलब मान लो किसी, एज फॉर एग्जांपल किसी मटेरियल के ऊपर में तुमने फोर्स डाल के उसका 10 mm तक का डिफॉर्मेशन कर दिया. अब तुम चाहते हो 10 mm डिफॉर्मेशन हो उसका, इसीलिए तो तुम फोर्स अप्लाई किए हो. तो फोर्स उठाने के बाद, रिमूव करने के बाद वो अगर 10 mm तक डिफॉर्मेशन रख पाए, इसी नेचर को प्लास्टिसिटी बोलते हैं. और देखा, ये इलास्टिसिटी के पूरा उल्टा है, लेकिन ये भी नेसेसरी है. नेसेसरी है
और ये भी याद रखना, फॉर मेजॉरिटी ऑफ मटेरियल्स द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप इज नॉन लीनियर इन द प्लास्टिक रेंज। अब देखो ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, मान लो ये जो एक स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, this is stress and on this side strain, and suppose this is a stress strain diagram for a mild steel. Okay, now we all know that here is very important point, there is one point and it is called elastic limit. Okay, elastic limit. And now if I divide this diagram based on this point, now on the right side of the diagram it is called plastic range. It is called plastic range, and on the left side of the diagram it is called elastic range of that particular material for which this diagram is produced. Okay, elastic range and plastic range. Clear? Clear? Fine. Now I am moving to the next topic, that is stiffness. It is also called rigidity. Okay, I am erasing this. It is also called rigidity. It is defined as the ability of a material to resist deformation under the action of an external load. मतलब जो डिफॉर्मेशन का एगेंस्ट में काम करता है जो प्रॉपर्टी, उसी को बोलते हैं स्टिफनेस. ओके, अब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी is the measure of stiffness. We all know the modulus of elasticity, Young's modulus. Okay, now for better understanding we have to move to the stress strain diagram for this particular property. Now suppose I am drawing again the stress strain diagram here. Suppose we are comparing two materials, material A and material B. Okay, and the stress strain diagram of the two materials are different, material A and material B. So from the diagram, how I can define the stiffness of these two materials, which one is greater or which one is lesser? Now suppose I am taking here certain distance, means distance at this direction means what? You can say deformation. Suppose this is x1, and if I draw a line from this point, now try to understand one thing. For the material A, to get the deformation amount of x1, we have to apply the stress amount is this much. If it is small a or a1, and for same thing, to get the same deformation in case of material B, we have to apply this much of stress, A2. And from this diagram anybody can understand that A2 is much greater than A1. So what does it mean actually? Same amount, to create the same amount of deformation, we have to apply greater amount of stress in case of material B. Okay, in case of material B. So in this way we can say the stiffness of the material B
is greater than the stiffness of material A. And another thing you can also see from this diagram that suppose for the two diagram A and B, the slope of this line, suppose this is theta 2, and the slope of this line, suppose this is theta 1. Which one is greater? Theta 2 is greater than theta 1. Means the stiffness of the B material is greater than the stiffness of A. Okay? And we also know that the modulus of elasticity can be defined by the slope of the stress strain diagram, this linear range. Okay? So in this way you can understand the stiffness of the material. Next, resilience. Okay, I am removing this. अच्छा, 1 सेकेंड, ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हमें वापस से लगेगा, तो हम बाकी सबको डिलीट कर देते हैं. अब ये रहने देते हैं. ओके, now resilience. It is defined as the ability of material to absorb energy when deformed elastically and to release this energy when unloaded. अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ? Resilience is defined as the ability of a material to absorb energy when deformed elastically. इसका मतलब ये होता है कि इलास्टिक रेंज में, हर एक मटेरियल का अपना अपना इलास्टिक रेंज होता है, हमें पता है. तो अब इलास्टिक रेंज के अंदर में कौन सा मटेरियल ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है, उसी को हम ज़्यादा रेजिलिएंट बोलेंगे. मतलब क्या? मतलब इलास्टिक लिमिट के अंदर में रहता है. मतलब क्या? मतलब इसका परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होगा. उसके अलावा वो कितना ज़्यादा डिफॉर्मेशन सह सकता है. ओके, the modular resilience is measured by a quantity called modulus of resilience, which is the strain energy per unit volume. Clear? So, and one thing must remember. Okay, now I am moving to the stress strain diagram again to understand in a better way the resilience. Suppose this is the elastic limit. Okay, suppose this point is elastic limit. Now draw a line from elastic limit point, and this area, now this area, if you can measure this area represent what? This area represents the energy absorbed by that particular material within the elastic limit, and that is nothing but resilience of the material. तो इसका क्या मतलब हुआ? एक मटेरियल को लेके उसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम निकालो, फिर वहाँ उसके इलास्टिक लिमिट से ऐसा नीचे सीधा एक लाइन खींचो. अब जितना एरिया आ रहा है प्लेनीमीटर से उसको चेक करो कितना आ रहा है, तो वो जो एरिया निकलेगा वही उसका रेजिलियंस होगा. ठीक है, तो अगर दो मटेरियल में कंपेयर करना चाह रहे हो तो ऐसे दो चार्ट में उसका भी एरिया निकालना पड़ेगा. दो चार्ट में उसका भी एरिया निकालना पड़ेगा. आप दो एरिया में कंपेयर कर लो, जो जितना ज़्यादा होगा, मान लो ये A1 ये A2, तो A1 अगर A1 ग्रेटर देन A2 आया तो मतलब मटेरियल B का रेजिलियंस प्रॉपर्टी मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस ज़्यादा है. इसका एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं. जैसे एक स्प्रिंग का नेचर कैसा है, मतलब स्प्रिंग का रिक्वायरमेंट क्या है कि वो परमानेंट डिफॉर्मेशन ना हो के वो ज़्यादा से ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो, है कि नहीं? विदाउट अलाउइंग द परमानेंट डिफॉर्मेशन वी
want from a spring maximum deflection. So this resilience property is checked for the spring material. It is very important property. Okay friends, up to this, I hope you all understand this. अगर किसी के मन में कोई डाउट है तो कमेंट करके बताना, और कोई अगर सजेशन है तो वो भी कमेंट करके बताना. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स.